नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 27 नवंबर 2024 है। 23 नवंबर 2024 को इंडियन कोस्ट गार्ड का एक डोनियर विमान ने अंडमान सी में एक फिशिंग बोट का पता लगाया, जिसकी गतिविधि संदिग्ध लग रहा था। इसकी सूचना अंडमान एंड निकोबार कमांड सेंटर को दिया गया। उसके बाद वहां से एक फास्ट पेट्रोलिंग वेजल्स आया, जिसने उस म्यांमारीज फिशिंग बोट का पीछा किया और धर दबोचा। तलाशी के दौरान उस फिशिंग बोट में अवैध मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स का पैकेट्स पाए गए। दर्शकों, म्यांमारीज फिशिंग बोट का नाम था सो वे यान हू। दर्शकों, दिनांक 26 नवंबर 2024 को ड्रग्स के उस मामले में अंडमान एंड निकोबार नेवी कमांड और अंडमान पुलिस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कई जानकारियों का खुलासा किया। जिसमें मुख्य जानकारी ये था कि उस म्यांमारी फिशिंग बोट से लगभग 6000 केजी मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स को जब्त किया गया है और साथ में 6 म्यांमारीज को गिरफ्तार किया गया है। ये ड्रग्स इंटरनेशनल मार्केट के लिए था। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोऑर्डिनेशन के साथ चैलेंजिंग वेदर में ड्रग्स का इतना बड़ा खेप पकड़कर इतिहास रचा है। डीजीपी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड श्री हरगोविंदर सिंह धालीवाल आईपीएस ने बताया कि ड्रग्स लगभग 6000 केजी था, जो कि प्रत्येक केजी मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स का मार्केट वैल्यू 6 करोड़ है और पूरी ड्रग्स लगभग 36,000 करोड़ का है। गिरफ्तार किए म्यांमारी से इंट्रोगेशन चल रहा है। पूरा ऑपरेशन कमांडेंट अंकित शर्मा और टीम ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। दर्शकों, डीजीपी सर ने आगे कहा कि अंडमान क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पोचर्स का घुसपैठ हो रहा है। पिछले 5 सालों में 640 पोचर्स को, जो कि अलग अलग देशों से नाता रखते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दर्शकों, आगे के वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ अंश देखिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। Based on inputs, we undertook an operation and on 25th of November, ICG of Andaman Nicobar Command created history in the maritime domain of India by apprehending a Myanmarese fishing boat. The name is So Wai and Tu in the Andaman Seas, which was carrying approximately 6,000 kg of suspected prohibited drug, meth as it is popularly known. 6 crew on board, all of Myanmari origin as we understand right now, were also apprehended, and they were carrying one satellite phone with them. The anticipated value of this drug is in thousands of crores. Right now we don't have an actual estimate of this particular amount. The success of this operation is a result of meticulous surveillance of the likely areas and prompt speedy response by the Joint Operations Center and the ship crew. The sea state and weather was challenging, but the valiant crew stuck to the task of shadowing and subsequently boarding the ship once it entered our waters. I commend the bravery and dedication of the commanding officer, Commandant Ankit Sharma, is here to my right, and his team, who carried out this challenging operation. The success of this effort reflects not only their skill and commitment, but also the collective determination of a nation to uphold the rule of law. The merits of drug trafficking can only be tackled by the collective efforts of all concerned departments. The ANC and Andaman Nicobar Police have been actively collaborating across all spheres. Numerous operations against poachers, illegal trafficking, and surveillance of outlying islands have been jointly undertaken. I must place on record the invaluable support rendered by the police team across all these spheres. DGP H.S. Dhaliwal and his team have also provided us valuable inputs across all operations in the past. Has already been told by the sir. So I will just add on to all this that this operation is actually a culmination of very coordinated efforts of all the units who are very proactively guarding the seas of Andamans, and there has been absolute brilliant coordination between the ANC command and the Andaman police. And just to put it in perspective, in last 5 years there have been 414 cases, and
total seizure of this particular contraband was 637 kgs of methamphetamine. And this single seizure is more than 6,000 kgs. And as far as various estimates are concerned, its value is around 6 crores in international market per kg. So the value of this will be approximately 36,000 crores. 6 Myanmaris has already been said to have been arrested. Satellite phones, etc. have been recovered. And today they will be produced in court. Their police custody remand will be taken. The entire contraband has already been seized. And we would only add on to what has been already briefed, that it has been a very coordinated efforts, not only in terms of patrolling and heightened alert, but we have been getting full support from the Commander-in-Chief and all his staff, not only training of our people, even as far as operational things related to operations of our ports, etc. are limited maritime resources are concerned, because the Andaman Police, of course, doesn't have the capabilities to patrol in high seas, but wherever we have needed, the Andaman Nicobar Command has been totally supportive, due to which even in a routine manner, there has been a very high number of catches of poachers who have mainly originated out of Burma. And in last 5 years, we have had 640 nationals of different countries who have been arrested. So we will just add on to this that along with the Coast Guard, the entire ANC command, Andaman Police is committed to keeping the islands safe. रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।